Hello, my dear friends. Today I will discuss a poem, My Last Duchess. It is written by Robert Browning. Robert Browning was born in 1812 in southern suburb of London. He went to no regular school or any Cambridge or Oxford University, and he was the contemporary of Tennyson. Like Tennyson, he also devoted his life to literature, and he was fully appreciated by his touch of scholarship in his poems. He married Elizabeth Barrett Browning, who was also a renowned poetess of her age, and Robert Browning died in 1889. So, it was the brief introduction about the poet, and now we will discuss some works of Robert Browning, like dramatic lyrics, bells and pomegranates, man and woman, the ring and the book. So these are the most popular works of Robert Browning. Browning was a consummate master of poetic music and his thought. In his poems, we found love and death and love and life. So we can say that there is no softness that he cannot touch. So in his poems, he used the methods of conversation, and his characters, they have just a name instead of focusing it from outside. So we can also call it a simple dramatic fashion, because he talks about folding and unfolding of the characters. So if we talk about his poems, he mostly used blank verse, because in blank verse he is somewhat prosaic and rhythm and cadence. So in Browning's poetry, we may also call them obscure and mystic, but we should not forget that his obscurity is not because the poet says too little, but because he attempts too much. So this very poem, this also talks about the characteristics and character analysis of a character. So here, Duke of Ferrara, we call it. So let's start this poem. That's my last Duchess. That's my last Duchess. So this very title, it suggests some dramatic monologue. This poem published in 1842, and it published in dramatic lyrics. It was a collection of poems. The theme of this poem is, we may call it, marital relations of Alfonso II, the fifth Duke of Ferrara, and his wife Lucrezia di Medici. So these are two characters that are hidden behind this story. And it is also said that the Duke respected the character of Duchess, but he got murdered by this. After the death of Duke, he announced his intention to marry another lady. So he received an envoy of court of Leroy,
who desired to marry her daughter to this duke. So in this poem, duke is the speaker. He is the speaker that is standing before the portrait of his former duchess. मतलब ड्यूक की जो पहली वाइफ है, जो डचेस है, वो मर चुकी है. अब सेकंड प्रपोजल मैरिज के लिए उसके पास आया है. ये जो ड्यूक है ये अपने परिवार, अपने फेम के लिए बहुत कॉन्शियस है. सो ये जो पोएम है इसमें ड्यूक डेलिनिएट्स द कैरेक्टर ऑफ डचेस who is no more now. So here Duke reveals the envoy, he reveals the previous wife, and he narrates and he exposes before him his own character too. मतलब यहाँ पे वो अपनी पहली वाइफ का और खुद का, दोनों का कैरेक्टर कुछ यहाँ पे बता रहा है. तो यहाँ पर हम अज्यूम कर सकते हैं कि देयर इज़ ए और देयर मे बी ए साइलेंट लिसनर, क्योंकि कॉन्वर्सेशन फॉर्म में ये पोएम हमें लग रही है. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ब्राउनिंग ने ड्रामेटिक मोनोलॉग जो एक टेक्निक है उसका यूज़ किया है. और कुछ क्रिटिक्स हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि उसने अपनी फर्स्ट वाइफ का मर्डर करवा दिया था. तो ये जो ड्यूक है, ही इज़ वेरी ग्रीडी एंड ही इज़ वेरी सेल्फिश. और हम कह सकते हैं कि ही इज़ वन ऑफ द टिपिकल ड्यूक हु फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इटालियन रेनेसा. मतलब इटालियन रिनेसा के टाइम पे किस तरह के ड्यूक्स, किस तरह की सोसाइटी थी. ही इज़ द प्रॉपर एग्जाम्पल ऑफ दोज पीपल, दोज रिच पीपल, दोज रॉयल पीपल. सो थ्रू इनडायरेक्ट हिंट्स he lets the envoy know that he would like to have a bride, that she should be devoted to him only. That's why he demands rich dowry in marriage. So these lines are the characters of the duke. कि ड्यूक कैसा है, वो अपने आने वाली या अपनी सेकंड वाइफ से क्या एक्सपेक्ट करता है. तो ये पोएम कुछ इस तरह की है. द ड्यूक एंड एनवॉय who has brought the marriage proposal. That's my last duchess, looking as if she were alive, I call. तो जो मैरिज प्रपोजल लेकर आया है उसको वो ड्यूक अपनी फर्स्ट वाइफ की तरफ इशारा करते हुए दिखा रहा है कि ये मेरी वाइफ की पेंटिंग है. दिस इज़ द पेंटिंग ऑफ माई फर्स्ट वाइफ द डचेस. और ड्यूक आस्क द एनवॉय टू सिट डाउन. अब जो प्रपोजल लेके आया है वो उसको बैठने के लिए कहता है और एक ऑर्डरिंग वे में बोलता है. दैट पीस ए वंडर नाउ, फ्रा पेंडोल्फ हैंड्स वर्क बिजीली ए डे एंड देयर शी स्टैंड्स. अब वो क्या बताता है, वो क्या रिवील करता है कि ये जो पोर्ट्रेट है, कि द पोर्ट्रेट ऑफ हिज लेट वाइफ वॉज पेंटेड बाय एन आर्टिस्ट एंड हिज नेम वॉज पेंडोल्फ, फ्रा पेंडोल्फ, हु वॉज ए फ्रायर, मतलब एक सन्यासी टाइप का था, एंड whom he had engaged for this painting, and it was a special motive for this. तो इस तरह से ये जो ड्यूक है, he reveals that he got her portrait painted to engage some other professional painter. मतलब जो
फ्रायर था उसको उसने इनवाइट किया. सो देर मस्ट बी गॉसिप अबाउट सम अफेयर बिटवीन पेंटर एंड डचेस. सो वो इस तरह के कुछ हिंट हमें दे रहा है. इट रिलेट्स दैट द पोर्ट्रेट इज वेरी रियलिस्टिक एंड लाइफ लाइक. और दूसरी तरफ वो पेंटर की बहुत तारीफ कर रहा है कि ये जो पेंटिंग है इट लुक्स वेरी रियलिस्टिक एंड लाइफ लाइक. व्हेन अनवेल्स, जब वो इस पेंटिंग को हटाता है विजिटर को दिखाने के लिए. सो बिफोर द विजिटर्स दे सीम टू आस्क हिम हाउ द फेस ऑफ डचेस would come to possess such a sweet smile. कि डचेस के फेस पे कितनी स्वीट स्माइल है. तो ये सब उसको अच्छी नहीं लगती. मतलब उसको लगता है कि इस टाइम टाइट लिप्ड होना चाहिए था, उसकी स्माइल नहीं होनी चाहिए थी. समझ गए. तो कह रहा है कि फ्रा पेंडोल्फ बाय डिजाइन फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्स काउंट एंड सी द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लैंस बट टू माई सेल्फ दे टर्न सिंस नन पुट्स माई by the curtain I have drawn for you but I, and seemed as they would ask me if they durst, how such a glance came there, so not the first. Are you to turn and ask thus, sir? It was not her husband's presence only called that spot of joy into Duchess' cheeks. Perhaps Fra Pandolf chanced to say her mental lapse or my lady's wrist too much. मतलब इन लाइन्स में क्या कर रहा है वो. Duke says to envoy or the visitor that his late Duchess was very beautiful and she was very happy in everything she saw. मतलब उसके साथ जो भी होता था वो उसी में खुश रहती थी, बहुत खुश रहती थी. शी फेल्ट ग्रेट प्लेजर व्हेन सम ऑफर्ड हर एनीथिंग और यूज्ड टू शो एनीथिंग. मीन्स शी वॉज वेरी हैप्पी. वो सबके साथ बहुत खुश रहती थी. एंड ही एडमिट्स दैट दाउ ही डिड नॉट रिजेंट हर व्हेनेवर बट कुड नॉट अप्रिशिएट. लेकिन ये सब उसको अच्छा नहीं लगता था. वो उस ड्यूक को ये पसंद नहीं था स्पेशली. बट शी एक्सप्रेस्ड ग्रेट जॉय व्हेन शी सॉ समथिंग स्पेक्टेक्युलर इन नेचर बट सीम टू रिगार्ड द नोबल फैमिली विद इंडिफरेंस. शी वॉज वेरी काइंड टू डोमेस्टिक सर्विसेज एंड यूज्ड टू थैंक देम फॉर देयर प्रेटी सर्विसेज. इवन वो अपने सर्वेंट्स के साथ में भी बहुत काइंड बिहेव करती थी और वो उनका भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी उनको थैंक्स कहा करती थी. तो द ड्यूक ही थॉट ऑफ रिफॉर्मिंग हर. उसने क्या सोचा कि मैं उसे सुधार दूंगा. बट ही फेल्ट इट बिलो हिज डिग्निटी. लेकिन उसने क्या माना कि ये मेरे आत्मसम्मान के अगेंस्ट है टू फाइंड विद सच ए केयरलेस ऑर्डिनरी एटीट्यूड. कि इस तरह का एटीट्यूड हम लोगों का नहीं होना चाहिए. यहाँ तक. फिर क्या है कि नाउ ड्यूक इज कंप्लेनिंग और ही इज इन कंप्लेनिंग टोन. वॉट एवर ही इज सेइंग ही सीम्स इन कंप्लेनिंग मोड. So again he goes on saying that the Duchess smiles were not reserved. कि जो डचेस की जो स्माइल थी वो सिर्फ मेरे तक सीमित नहीं थी. वो सबके लिए वैसे ही स्माइल किया करती थी. And she was catholic in bestowing her favors on persons without considering their social status and family. And he could not tolerate this. I was not able to tolerate this. The general attitude of his wife increased all the more with the passage of time. तो ये सब चीज़ें बढ़ती गई जैसे जैसे टाइम निकलता गया और ये सब ड्यूक को
पसंद नहीं था, बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट हिज डिग्निटी. सो नाउ this Duke was feeling jealous, and he was feeling resentment that he should got her murdered. Thus, he murdered her. He gave order to murder her. So, all her smile stopped forever. उसकी जो स्माइल है वो हमेशा के लिए रुक गई. तो अब क्या कहता है कि she thought and cause enough for calling up a spot of joy. She had a heart. How shall I? Too soon made glad, too easily impressed. She liked whatever she looked on, and her looks went everywhere. So it was all one. My favor at her beat, the dropping of the daylight in the west, the bow of the cherry, some officious fool, or broke in the orchard for her, the white mule she rode with round the terrace, all and each would draw from her alike the approving speech, or blush. At least she thanked when good, but thanked. मतलब उसके लिए हर चीज़ एक जैसी थी. उसके लिए छोटी खुशी भी उतनी थी और बड़ी खुशी भी उतनी थी. तो वो यहाँ पे क्या कह रहा है ड्यूक, that the physical beauty and character of his late Duchess was prospective. He says that the visitor, he pays more importance to beauty and manners of count's daughter. कि वो क्या कहना चाहता है इनडायरेक्टली, कि वो क्या एक्सपेक्ट करता है विजिटर के, कि उसका जो काउंट है उसकी डॉटर बिल्कुल एटिकेट्स में रहे, उसको मैनर्स होने चाहिए, उसको रॉयल फैमिली के मैनर्स होने चाहिए. इनडायरेक्टली वो यह कन्वे करना चाहता है. ही वुड गिव ए रिच डॉरी इन मैरिज इन अकॉर्डेंस विद हाई फैमिली ट्रेडिशन एंड रेपुटेशन. सो ड्यूक यहाँ पे क्या रिवील करना चाहता है? द ड्यूक हियर रिवील्स हिज ओन ग्रीडी कैरेक्टर. क्या दिखाना चाहता है कि वो खुद कितना ग्रीडी है, खुद कितना लालची है. एंड ही ट्राइज टू इम्प्रेस अपॉन द विजिटर दैट ही इज लवर ऑफ एन आर्ट एंड ब्यूटी. क्यों? क्योंकि इट फिट्स टू हिज रैंक एंड नोबिलिटी. सो आई थिंक this is okay till now, and next we will do in our next video. Thank you.